Himmat Talks. Today, I am very happy to introduce our special guest, Miss Meenal Gupta. She has done her MBA from IGNOU and Masters in English from Kanpur University. She has worked with MNC Serco at Gurgaon and also worked with educational institutions in Lucknow. She is presently serving as an IELTS and English trainer at British School of Languages. She has trained many students from various countries like UK, US, यूएई, जर्मनी, फ्रांस एक्सेट्रा। मैम, आज के इस सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। Thank you so much, ma'am. It's even my pleasure that I'm with you. Thank you so much, ma'am, again. Thank you for coming. So let's start today's session. And my first question to you is, please tell us something about yourself and your journey of being an English teacher as well as a motivational trainer. Well, I would say, like it's nothing like some journey or something. Means I always wanted to do something. I was always associated with the idea. Of course, it happens with with a girl, with a boy, or everyone that we are associated with the identity of our father, husband, or something like or wife or something. But it happens as a wife, or it happens like you want to do something in your life. So of course you are always in search for that. And I have to do something. I have to do something. So I was also on the same way. I thought like what I have to do that I can like take care of everything at my home, and I can do. I can just I can just proceed myself on a way that I'm doing something in life. Just I started. I was very good at English, so I thought I must just make my career in this. And slowly, just because of my English, my spoken power, I just got the chances for some motivational, type of speeches or something like that. The journey started, and today I'm here with you. Sorry. Okay. Am I audible now? Yeah. Yes. Okay. Now you're Moving to the audible. next question. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी आप हिंदी में आंसर्स दें बिकॉज हमारे व्यूअर्स हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। जी। Okay, sure, ma'am. I will try. या Actually, this is in my run. All the time I'm in the run of English, so it आई automatically कैन comes out. But अंडरस्टैंड। of course. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्यों लगता है इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और कैसे आप स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रखते हो या इंग्लिश स्पीकिंग को आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे जो आप देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं आपको? Well, सबसे पहले तो ये बोलूंगी, like English is something it is now the global language. Everywhere the English is accepted. English एक global language बन चुकी है. सब जगह ये accepted है. If you're just going to try in any sector, कभी किसी भी sector में if you want to go, you want to join, I would say without English you can't do anything. You can beat IT, you can beat like NEET, everything, but ultimately you have to face some interview ना. So English is the bar. अब English जो है वो एक बार बन चुकी है. आप हर सब कुछ प्रिपेयर कर लो एवरीथिंग, बट जब आप फाइनल स्टेप पे पहुंचोगे you have to face the interview only. So English is very much important these days. And as you were asking to me, like how will you keep motivated to the viewers or something, so I would say in life there is nothing which you can't achieve. Just mindset. Everything is mindset, and of course the supreme power, God. So like just make up your mind that you can achieve this, and of course you can achieve this. So English is nothing. English is also nothing, because daily I come across with many of my students, and candidates I'm teaching 40 plus, 50 plus, even 60s aunties are there. So like they also say the same problem with me, but it is nothing. Just determine yourself. अपने आप को एक बार determine कर लीजिए कि I have to do this, and nothing can stop you. आप English बहुत अच्छे से कर सकते हो. I'm having many tips which I can give you. So of course, just resolve you will do this, and of course you will be able to do this. So English is nothing. हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि आपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया है क्या? तो डेफिनेटली हमने किया है। आप हमारे ऑफिस नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैम, जैसे कि आपने बताया इंग्लिश स्पीकिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू क्रैक द इंटरव्यूज़ एंड
जो इस पॉइंट पे आपने हाईलाइट किया, बट अपार्ट फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत मैटर करती हैं। सो आप क्या Exactly. टिप्स देते हो अपने स्टूडेंट्स को, सो फॉर टू ग्लोरीफाई देयर पर्सनालिटी? Well, personality. Your sound speaks later. Your personality speaks at first. So I would suggest you, when you are going for some interviews, when you are going to meet someone, you must be very much presentable. Okay. So like हमें अपने आप को ऐसे present, just be confident. Confidence is the main thing. It is the main thing. You can win any battle if you have the confidence. When you are speaking, so speaking is lifeless until you are having the body language. Your eyes should speak, your shoulders should speak, your hand should speak. Means, not only your lips are speaking. So this is called the presentation. This is called the personality. So communication is the combination of not only speaking but all over your presentation. How your features, how your gestures, how your body language. So everything should be there. So this is called a complete personality and best communication. So just go everywhere with a full of confidence, and you can win any battle. आप हिंदी में भी बोलेंगे, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, आप हिंदी में भी बोलेंगे, बट अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, इफ यू आपकी आईज बोल रही है, आपका चेहरा बोल रहा है, देन ऑफ कोर्स हाफ बैटल तो वही हमारा विन हो जाता है जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं सिर्फ अपनी आंखों से. सो द बेस्ट कम्युनिकेशन इज दैट जिसमें हम सिर्फ ना लिप्स से बोले, हम अपने आप को पूरा बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस करें. थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. मूविंग टू द नेक्स्ट अच्छा. क्वेश्चन. बहुत लोग इंग्लिश स्पीक करने में उनको स्ट्रगल होती है, या वो बोलने में प्रॉब्लम होती है, वो इंटरैक्ट करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है. तो कौन से क्लासेस वगैरह आप प्रोवाइड करते हो, और कैसे वो क्लासेस वगैरह वो ज्वाइन कर सकते हैं? वेल सी, डिपेंड करता है पर्सन पर कि उनकी क्वेरीज कैसी हैं. कुछ लोगों को इंग्लिश बोलना आती है बट कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो दैट्स एक वन अनदर थिंग. एक दूसरी चीज है, कुछ के साथ ये होता है बेसिक से बिल्कुल उनको फिनिशिंग चाहिए होती है, उनको कुछ भी नहीं आता है. तो सबसे पहले तो यही करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज कर देते हैं. यू कैन डू दिस, चाहे वो एक सेंटेंस में 4 गलतियां कर रहे हो, बट स्टिल आई से यू आर गोइंग गुड, यू आर सुपर्ब. कॉन्फिडेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. दिस इज द ड्यूटी ऑफ द मेन ड्यूटी ऑफ द ट्रेनर कि आप कैंडिडेट को पूरा कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज कर दो. सो ऑफ कोर्स उसको लगेगा आई एम गोइंग गुड, आई कैन डू दिस. मैं फालतू में ही करता था लाइक दैट समथिंग. सो ऑफ कोर्स यू कैन जस्ट डू दिस. सो different levels are there of the spoken English. Spoken English not only to speak with a fluency, it is nothing. Spoken English is something जहाँ पे आपको basic भी चाहिए कुछ candidates को, where they need the confidence also and they need the fluency also. Somewhere those are speaking in a very fluent manner, but I would say full of mistakes, like grammar is not there. So I am having courses. I have designed the courses in such a way that I am giving the training. Means my classes are customized wherever those are needing whatever kind of things. I'm providing that. I'm giving the grooming according to their need, not according to my course. I'm going to first week I'm going to do this, another week I'm going to do this, third week, not like that. The courses are totally customized according to the need of the candidate. So I would say like wherever they need or they lack in something, I'm just moving accordingly that. अभी मैं आपको दो वर्ड्स में या 2 मिनट में समझाना चाहूँ तो it will be a little difficult, but of course these are all customized. इट्स गुड दैट इट्स कस्टमाइज्ड, बिकॉज बहुत सारे लोगों की डिफरेंट नीड्स होती है, डिफरेंट लेवल्स होते हैं. सो अच्छी बात है कि ये कस्टमाइज्ड है. और कितने दिनों की कोर्सेज होती है मैम ये? It also depends, but crash course से अगर हम शुरू करें तो it happens like for the 1 month, and within the crash course we just give them the base. In the second month I would say we just create a confidence, full confidence. Those get, even within the 6-7 classes they start finding many changes in them within the 6-7 classes, and then we create a base. And in the second month we give them the grooming for their vocabulary, and in the third month they become fully polished with the personality development, not only with the spoken English, so that their full personality should speak whenever those are facing to someone, or whenever those are in front of some listener. So 3 months are required for sure, but still some candidates go with 1 month and 2 months also. So I just try myself within 1-2 months whatever they like want to join with. So I just try to fulfill all their needs, but 3 months are of course required.
So 3 months is the minimum time period they should join the class. Yeah, exactly. ओके। जैसा कि आपने बताया 3 मंथ्स की जैसे ये कोर्स होती है, तो किसी ने अगर कोर्स कर लिया, बट कई बार ये होता है कि कुछ लोगों को इंग्लिश आती भी है, बट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पीकिंग तो इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है। दे आर फ्लुएंट इन Very इंग्लिश बट वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते, या एक फियर होती है, हेजिटेशन होती है, तो उस पे कैसे काम करें? see, public speaking, of course, public speaking is the main fear these days within the candidate. They say ki we have the thoughts in mind, but we are standing in the public, so we become feared. Like some kind of fear is there in my heart. I'm not able to express myself or something. So, well, I first infuse them with, as I have already told you, I just first infuse them with the full of confidence. I say, means I'm just telling to this question, I'm replying to you, but still I would say, ma'am, I am just giving these views to my viewers. Like, see, there is nothing like you can't do. I told you, na, jo public mein khade hain, the people who are standing in the public, do you know those are very good? How can you say those are very good? Or still, if some people are good, so let them be good. Now, you yourself having your own personality. Na? So just go with. Why to fear? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है. आप जैसे हो, you are the best. सब इंग्लिश बोल के ही बड़े नहीं होते हैं. हम हर स्टेप पे we learn the things. So it is something like whatever the Richa ma'am said as you are public speaking. If you need to do, just do the public speaking, because everybody is not speaking with the grammar. Everybody is not speaking with the grammar. Without grammar also we can express ourselves, but within the certain limits. Okay, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होंगी, ऑफ कोर्स अदर्स विल नोटिस. एक क्राइटेरिया होता है चीजों को एक्सप्रेस कर पाने का. तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए. आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है. कोई भी जो आपके साथ भीड़ में खड़े हैं, दोज आर नॉट ऑल बेस्ट. सब किसी ना किसी चीज में बेस्ट है और कहीं ना कहीं पीछे हैं. तो आपको डरने की जरूरत क्या है? देयर इज नथिंग टू फियर अबाउट. जस्ट गो बिंदास. बिल्कुल। जैसा कि आपने कुछ टिप्स दी, बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश स्पीकिंग, जो स्टडी मटेरियल्स होने चाहिए कि वो उनकी वोकैब्युलरी को भी एनहांस करे और उनके ग्रामेटिकल एरर्स भी इम्प्रूव हों, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? कौन से बुक्स, कौन से स्टडी मटेरियल्स बेटर हैं? Of course. See, abhi these days, so YouTube is the best way to learn anything. Insta the best. So when shorts are there, you just, if you don't have much time, you are professional or whether you are at the age of 15. If age of 15 also you are doing study, at the age of 40, 30 you are doing job, you are not having sufficient time to go with all this preparation or something. Just go with the YouTube shorts. There are several channels, several. I would not ask you to go with the millions of subscriber channel. Just go with any of the channel. They are spreading some knowledge. So just go with that. Or if I talk about some books, etc., then of course in the market, like books, generally people go with, Rain and Martin and different kind of books. These are really high level books. Just give a beginning from the basic level books. Just go in the market and just ask about the books which are, go for the 8th to 10th class books. These are syllabus books are really more useful than any other book. Do not go like बहुत बड़ी सी कोई publication की book लेनी है and we have to start the preparation. It's nothing like. Just go and just read like normal basic level books, class 8, 9, 10. This give you the strong base. ये जो 8, 9, 10 की बुक्स होती हैं ना, ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बेस देती हैं. इससे आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होती है. और फॉर द स्पोकन इंग्लिश आई वुड से टॉक टू योरसेल्फ ऑल द टाइम. सी, हम हिंदी में बोलते हैं ना, हमें आदत होती है अपने से बातें करने की. जस्ट दिस इज द बेस्ट रेमेडी. जस्ट टॉक to yourself all the time. Whatever you are going to do, whatever you have done, and right now whatever you are doing, just explain yourself everything. I have seen the interview and I am going to do this. I have done this. Like this, just talk to yourself. It will give you the fluency also. And the books, as the Richa ma'am was asking, so I would say the books are something 8, 9, 10. These books are sufficient to give you the proper knowledge for the grammar as well as sentence formation. You will get how to make a proper sentence. Just go with these books. Even literature you can read. Literature is quite beneficial for you to let you know about the proper sentence formation. Okay. Yes, and they can also include English newspapers as well. Of course, of course. Generally, what the people do, they just वो hire कर लेते हैं कि मतलब daily hawker आके हमें एक newspaper देंगे और Times of India. You have not to do this. Just purchase one Times of India. Why am I telling this? I'm not telling you with the point of view of reading news. I'm just telling
you to gain some knowledge on the English. तो आपको क्या करना है, just purchase one newspaper and let it run for 20 days. Why to waste the money? Money waste करने की जरूरत नहीं है. इसको 20 days चलाइए and whatever Times of India, such a thick newspaper. Just go for the your favorite sections. आज मैंने इतना read किया, कल मैंने इतना read किया. If daily you will go with the इतना article I have to read, so of course you will get bored. So need not to go with the lengthy and broad article something. Just make a schedule. I have to read 7 lines daily, 6 lines daily, and try to observe all the nutrition from that. Like, see, daily collect 2 vocabulary words. If daily you are doing this, 60 words you will be collecting after a month. If we make it half, then at least 30 words you are doing. So 30 words vocabulary in a month if you are doing, so it is more than sufficient. So just go with the newspapers. Just observe the sentence formation within those 7 lines. Just observe the 2 daily vocabulary words. So it will really give you the good growth. So as the ma'am mentioned, it is really good. Just go with the Times of India, complete within 20 days it, and then purchase another and just go, just do the same cycle. Okay. We are talking about vocabs and words and word meanings. So when it comes to pronunciation, कई बार ऐसा होता है कि most commonly जो words होते हैं जिसको हम daily basis पे use करते हैं, but वो कभी कभी mispronounce होते हैं. तो आप कुछ ऐसे words जो mispronounce होते हैं और जो daily basis पे use होते हैं, उसका आप एक correct pronunciation आप हमारे viewers को बताओ so that they can use that in their daily lives. और अगर वो इनकरेक्ट कर रहे हैं तो आज से फिर वो करेक्ट कर लें. Of course. Generally we go for big word, big, big. So why to use the big word? There are many synonyms. Huge is there, large is there, and I would say there is gigantic. So generally people do not pronouncing it correctly. Gigantic is little difficult for them. So one tip is there. First of all, whenever you find any word is difficult, just make it in the sections. Gigantic is there, underline. So first divide it into parts. Giga, Giga, or you can say Gi, that is sufficient. Guy, then Gan, Gan, and then Tic, Guy, Gan, Tick. So this is the best way to make something practice if your pronunciation is not that much apt that you could pronounce the difficult words into one. Okay, so आप ऐसे करो, पहले पार्ट्स में अच्छे से डिवाइड कीजिए, फिर एक एक पार्ट को पढ़ना कीजिए, 2 बार अलग अलग पढ़िए. जस्ट रीड इट इन द पार्ट सेपरेशन, फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए एक साथ बोलने की, गाइगेंटिक. तो लाइक दैट यू स्टार्ट. कोई भी वर्ड है, जस्ट जस्ट स्प्लिट इट इनटू द पीसेस. उसको पीसेस में स्प्लिट कीजिए, देन मेक इट अलग अलग करके, देन कम इनटू वन. सो इट विल बी गुड. तो gigantic is a word which we use for something big in size or somewhere. So, and it is very, if you are in touch with social media, so this is very prevalent these days. The word is very common. Yes. हमने स्पीकिंग स्किल्स के बारे में बात किया, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग स्किल्स, हाउ टू इम्प्रूव इट? हाँ, if it comes to the writing, see, give a basic beginning. When you are going with the basics, like writing is something कि हम कहीं से भी begin करना चाहें तो नहीं कर सकते. We have to give a base, क्योंकि writing means your grammar must be very much correct. Vocabulary very should be very much apt. So just give a start. Just write one paragraph daily. And first of all, what you have to do, see all around you, small articles are there. Just try to just analyze them. What is their color, क्या है, size क्या है, and just start making small sentences. ठीक है, ये मैं बेसिक यूजर्स के लिए बता रही हूँ जिनको इंग्लिश काफी वीक है. तो आप पहले यहाँ से शुरू करो, अपने चारों सी और मोबाइल, अपना मोबाइल देखिए, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, इसको डिस्क्राइब करना शुरू कीजिए. दिस इज दिस मच इन साइज एंड दैट. तो इससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी. आप जो भी चीजें अपने आसपास देखेंगे, आपको उनके लिए नए वर्ड्स की जरूरत होगी. आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी और आपका सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा होगा. तो जब राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं हो तो डू वन थिंग, सबसे पहले छोटी छोटी चीजों को अपने राइटिंग पैटर्न में डिस्क्राइब करना शुरू कीजिए. ठीक है, जिनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है बट वो एडवांस लेवल पर लेना चाहते हैं, तो आप टॉपिक्स को निकालिए, नेट पर जाइए. आप अगर आपके पास कोई गाइड नहीं है तो नेट पर जाइए, टॉपिक्स को निकालिए और उनके छोटी छोटी चीजों को लिखना शुरू कीजिए. ठीक है, आप देखिए. अच्छा, अभी हम बात करें, प्रोफेशनल पीपल बहुत ज्यादा कहते हैं कि हमारी
like मेरी email writing is not that much good, मैसेज लिखना नहीं आता, बहुत अच्छे से नहीं आता. See, अभी तो right now this is the time you don't need any guide. Net is providing you everything. If you go onto the social media, Google, so you can find anything. So like just make the practice for 2 to 3 opening lines, ending lines for the emails. Then go to the body. Body needs what? किसी भी email की body है वो आपके topic से ही बनती है. Just see the topic and try to describe that. Learn some opening lines, learn some ending lines. Just apply them on in your email or something. So writing skill is something कि when you are जब आपका लेटर जा रहा है, आपकी email जा रही है, तो you are not there. You can't express yourself. सिर्फ वही आपकी पूरी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है. तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए. ओपनिंग लाइंस, एंडिंग लाइंस हर चीज की होती हैं, सिर्फ ईमेल की नहीं होती हैं. उनको कुछ थोड़ा लर्न कीजिए, उनको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए. जितना आप उन लाइन को पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो आपको और नए थॉट्स अपने आप डेवलप कर जाएंगे कि ओ आई कैन एक्सप्रेस दिस लाइन इन सच अ मैनर आल्सो. तो धीरे धीरे वो आपकी एक साइकिल बन जाती है. माइंड आपका इंग्लिश को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा. ऑटोमेटिकली थॉट्स डेवलप होंगे और राइटिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाती है. बट स्टार्टिंग में of course you need some help. Either you need some guide in your life or to go with the internet or Google. Okay. ओके मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसा कि आपने बताया कि इंग्लिश स्पीकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द इंटरव्यूज. दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जॉब इंटरव्यूज, उनके लिए क्या आपके टिप्स एंड गाइडेंसेस हैं? The interview, first of all, so you have to face your interviewers. Of course, your confidence level must be high. कभी भी गलतियां छोटी छोटी होती हैं, हर किसी से होती हैं, सब कोई गलती करता है, मैं भी करती हूँ. I'm not the exception. So what you need to do, जब भी गलती हो रही है, never go back. कभी पीछे मत जाइए. आपसे गलती हो गई, सपोज कि आपने दे के साथ में इज बोल दिया, दे इज. नेवर गो बैक. जस्ट विद द कॉन्फिडेंस कैरी आउट योर मिस्टेक्स. Carry out your mistakes. Sometimes in interviews, your not only your spoken English is seen. I would say rather they see your confidence level. If with the confidence you can carry out your mistakes, so this is your biggest strength, I would say. So this is nothing. Don't get feared about anything when you are presenting yourself in an interview. Just get your full command on your subject. जो भी आपका subject है, English से कोई डरने की जरूरत नहीं है. Just carry out yourself with full confidence. When you are going, just greet your interviewers in a very well manner. Just give them the full respect, all about, and use your second point after the confidence. Just use your body language. Your body language is really important. Stress on the words which are important in your speech, and just give full power to yourself. And again, I would say you can win any better. Just have the confidence. You are best. हमें पता है हम ISPCS के लिए एग्जाम के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहां बहुत बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं. ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल नीड नॉट टू फियर अबाउट. ठीक है, वो अपनी लाइन में दिग्गज है, कल हम भी हो सकते हैं. तो जस्ट कैरी योरसेल्फ विद द कॉन्फिडेंस. वेल, व्हाटएवर आई एम डूइंग एट माय बेस्ट लेवल. फर्स्ट पॉइंट, your confidence. Another point, your body should speak. Your body language should be there. You can kill, you can slay. Okay. ओके. एंड मैम, जैसा कि आपने मास्टर्स में इंग्लिश में मास्टर्स किया है, सो दोज हु वांट टू मूव अहेड विद द सब्जेक्ट इंग्लिश, सो उनके लिए क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स होते हैं? First of all, if we do not go for like very big things or something, then I would say basic level तो एक है ही, at least you can become an English teacher. Okay. हाँ, तो आपके साथ एक बहुत बड़ा benefit होता है. Just get your good command on English. At least you can become English teacher. और English की आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है. I have already mentioned this. It has become the global language. So of course it is in बहुत ज़्यादा डिमांड में. तो एक आपके साथ पहला benefit ये रहता है, you can become teacher. And when you go after like you have done your net or something, and sometimes I would say luck works. कभी-कभी आपका luck work करता है. If you have not done like something big, you have not taken some big degree or something, still by the experience, with your efforts and with your pleasing personality, you can reach up to the high level. So you can become assistant professor, you can become like on the temporary basis, you can become just make your place, and you can make your place in some university. Like you can do everywhere. The net and UGC not needed. You if you have this much qualities, just go on the temporary basis, just join, learn something. So of course, English opens many lines from a basic teacher to a high level teacher. And of course, you can just go for the documentaries. You can
go for, in newspaper line you can go for editing or something. Everywhere the English. So English opens up many lines. Even in bank, some kind of posts are there. Like these days, the girls are there who are not having like just doing class 12 and pursuing graduation or something. They can go for that tally callers. So, and BPOs are there. BPOs just the personality and spoken English, especially spoken English and personality, because BPOs nobody is able to see you. Just you have to attend the calls, give the calls or something. So English opens up many ways. BPOs are there, everywhere, all the sectors are there. Teaching line is there, newspaper is there, editing is there, in printing also somewhere the English is needed. So English opens up many lines. All the competitive exams even, they are having a part of English. So there also the English is needed. So it opens up many lines. And as you mentioned that you are an IELTS trainer, so please tell us something about that as well. IELTS also, I would say the people take it, such a big thing. Oh, IELTS is this. Oh, TOEFL is this. IELTS is nothing. TOEFL is nothing. Again, I would say it is all the matter of, it is just the matter of your uh, command on the grammar. Command on the IELTS need a conjunction, word sentence formation, grammar, all these things. It's just compiled up. And of course, see, IELTS are having 4 modules: listening, reading, writing, and speaking. So listening, writing, reading, you are off camera. Nobody is able to see you or something. You're just giving your exam. But speaking, when you are going to do, then of course someone will be there who will be interviewing you. So for that you need the confidence. So IELTS जब आप करते हो ना, तो उसमें भी कोई डरने की जरूरत नहीं है. हाँ, it is difficult, of course. It needs very high level vocabulary. बहुत high level vocabulary किसमें need होती है. लेकिन कोई बात नहीं है, अगर आप एक अच्छे से स्ट्रैटेजी प्लान करके आप प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, प्रिपरेशन करके जाते हैं, तो ऑफ कोर्स यू कैन हैंडल आइल्स आल्सो. होता है लोग अपना बैंड स्कोर डिजायर हमें इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए, नहीं आ पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में कमी रह जाती है. स्ट्रैटेजी हमें देखिए, आइल्स इज नॉट समथिंग हम स्कूल की पढ़ाई वी आर डूइंग एंड वी आर जस्ट 1-2 घंटा पढ़ लिया एंड इट विल बी वर्किंग. इट इज नथिंग लाइक दैट. ऑफ कोर्स व्हेन यू आर गोइंग फॉर द आइल्स, जब आप आइल्स के लिए जाते हो, तो इट नीड्स हार्डकोर प्रिपरेशन, थोड़ा हार्डकोर एक्स्ट्रा लेवल प्रिपरेशन इट्स नीडेड. सो व्हाट यू हैव टू डू, स्पेशली आपकी स्पोकन पे कमांड, इट शुड बी वेरी गुड. ओके. और स्पीकिंग कैसी, द पीपल नो द स्पीकिंग, बट स्पीकिंग नीड्स द लाइफ. स्पीकिंग में लाइफ होनी चाहिए, जानदार होनी चाहिए. आप बोलो तो लगे लाइक योर वर्ड्स आर कमिंग आउट एंड दीज आर फुल ऑफ लाइफ. क्या होता है, हम जाते हैं, ऐसा लगता है वी हैव लर्नड द थिंग्स एंड वी आर जस्ट वोमिटिंग आउट. हमने लर्न कर लिया और जाके बोल दिया. बिकॉज़ आइल्स नाउ many institutions are there providing that training for the IELTS or something. तो वो questions को रटा देते हैं, रटा दिया, those are preparing. Not every time. I'm not saying every time those are making them learn. Some people are there, those are just grasping and in your own words conveying. So this I'm saying, it needs that essence. कि जब आप बोलो तो लगे you are going natural. So IELTS is nothing. Listening, reading, easily you can score 9 bands, and then it comes, writing. Writing section a little difficult. Speaking is a little difficult, but not that much that you can't just achieve your desired, band score. You can easily do. Needs the concentration, good grammar, and spoken fluency with full of life. Means words में आपके जान होनी चाहिए. लगे कि आपने learn नहीं किया. You are just naturally speaking something. So just command on spoken English, then IELTS is nothing. And grammar, of course. Grammar, use of conjunction should be there. Passive voice, you must have the command over कि passive में कैसे मुझे अपने sentence को express करना है, how have I to express, like that. Otherwise IELTS is nothing. Writing पे थोड़ा command अच्छी रखिए and speaking पर अच्छी रखिए. तो of course IELTS आपका desired band के साथ में the first attempt you can achieve. Okay. Okay, well answered, ma'am. Moving to the next question. Thanks. जैसा कि आपने बताया, you are also a motivational trainer. So motivation is the biggest thing required these days for students as well. So what would be your tips for keeping the students motivated? Motivation again, I would say. Like, see, in life you can achieve anything. आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में. लाइफ में है क्या, सिर्फ मेरा हमारा माइंड है. लाइफ में क्या है, हमारा सिर्फ माइंड होता है. माइंड से बड़ी पावर नहीं है लाइफ में, ऑफ कोर्स, एंड द गॉड. सो आपने अगर
कुछ भी आप सोच लो लाइफ में, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि मोटिवेशन इज समथिंग नॉट इन द सेंस ऑफ कि आप किसी स्पीड में कुछ करने जा रहे हैं। मोटिवेशन हमें लाइफ की हर स्टेप पे वी आर नीडिंग द मोटिवेशन। कभी कभी वी बिकम फ्रस्ट्रेटेड विद लाइफ, एवरीबॉडी इज हैविंग हिज और हर ओन struggle in life. So never be frustrated with all that. It is just the phase of life. Soon it will be past. समय never stops. Time never stops. एक आता है, अच्छा आता है, बुरा आता है, like that it happens, the cycle. So need not to be worried about that. इन सबसे परेशान होने की कुछ भी जरूरत नहीं है. Just you need a way, just you need a direction. Just think in your mind कि if it has come, I have to face it boldly, and soon it will be past, and you will again be in the good phase of life. So just keep yourself all the time motivated. Sometimes it happens. I remain very much busy sometimes. So I sleep with lots of tensions. But I don't know what it happens after sleeping. When I'm waking up in the morning, I'm having एक अजीब सी एनर्जी होती है. स्ट्रेंज सी एनर्जी मेरे अंदर होती है कि इट्स नथिंग. व्हाई आई वाज वरीड अबाउट लास्ट नाइट. आई कैन जस्ट मूव इट अप. मैं मूव कर ले जाऊंगी, मैं कर लूंगी. तो अपने में कॉन्फिडेंस रखिए. जस्ट कीप द कॉन्फिडेंस इज द बिगेस्ट की फॉर एनी काइंड ऑफ हर्डल इन योर लाइफ. आप में कॉन्फिडेंस है, आई कैन जस्ट क्रॉस दिस. मैं इसको क्रॉस करके जा सकता हूँ, मैं यहाँ से हट सकता हूँ और एक नया लेवल ले सकता हूँ लाइफ में. जस्ट इस थॉट को अपने माइंड में रखिए और अपने भगवान पे भरोसा रखिए. आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हैं, जिस पावर में बिलीव करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, यूनिवर्स, व्हाटएवर, जस्ट बिलीव इन दैट and there is no hurdle which you can't cross. This is my personal observation. होता है ना, हर किसी की लाइफ के स्ट्रगल्स होते हैं. हम बहुत परेशान होते हैं. We become really frustrated, but just believe in God and in your own karmas. Karma is the biggest thing. अगर if you have the good thoughts, you are not thinking for anybody something bad, or like you have clean heart and clean mind. कि ठीक है, गुस्सा निकालिए. जो भी आ रहे हैं दिमाग में, गुस्से को निकाल दीजिए. तो आपके दिल में क्या होगा? यू आर ऑलवेज गिविंग द पॉजिटिव वाइब्स ऑफ योर्स टू एनीबॉडी. आप हमेशा अपनी पॉजिटिव वाइब्स को किसी को देंगे. ठीक है ना. गुस्सा आ रहा है एट अ मोमेंट, जस्ट एग्जिट इट आउट. इसको निकाल दीजिए. दिल में किसी के लिए कुछ मत रखिए. दैट दिस इज द डिफरेंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइब्स. इफ यू आर कीपिंग द बैड थिंग्स फॉर अदर्स इन योर हार्ट, then what will happen? You will always spread the negativity everywhere. कभी भी नेगेटिविटी को स्प्रेड मत कीजिए. ये आपकी खुद की पर्सनालिटी को हार्म करता है. जस्ट बी वेरी मच पॉजिटिव ऑल द टाइम फॉर एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड इवन फॉर द अदर्स. कुछ हो गया किसी के साथ में, इट्स ओके. होता है, वो भी तो इंसान है. गलती हो गई तो इट डजंट मीन कि आप उनको कुछ भी बुरा बोलो, ग्रज रखो उनके लिए. इट्स नथिंग लाइक. जस्ट बी वेरी मच पॉजिटिव. गुस्सा आया, बच्चे हैं डांट दीजिए. बड़े हैं, थोड़ी देर के लिए गुस्सा निकाल दीजिए सुटेबल वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स में. ठीक है ना. स्लोली स्लोली ऑल द थिंग्स विल बी काम, योर माइंड विल बी ओके, और अपने भगवान को याद कीजिए, ऑल विल बी फाइन. कुछ भी लाइफ में ऐसा नहीं है जो आपको फ्रस्ट्रेट कर सके, आपको मोटिवेशन आपकी पीछे बैक कर सके खींच कर. कोई कुछ नहीं कर सकता. कीप योरसेल्फ ऑल द टाइम मोटिवेटेड. अगर दिल साफ है, आप हमेशा खुद से मोटिवेटेड रहेंगे. अपने दिल को साफ रखिए. किसी के लिए कुछ बुरा मत सोचिए. नेवर एनीथिंग. गॉड विल ऑलवेज हेल्प यू, और दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन. As you mentioned about choosing better words, so when it comes to choice of words, so हमारे choice of words क्या होने चाहिए? क्योंकि कई बार लोग कुछ बोलते हैं, then they have regrets. So what would you guide to have a better choice of words, or they should analyze before saying? No, of course, when we are when we are in anger, so how can we choose our words? It happens like out of anger something slips out, but this much command we should have on our mind कि something is happening. I told you, suitable words you have to use. If we are having the good heart, clear heart, clean mind, then how the bad words can come out? I don't believe in this. If you have the good heart, always the normal simple words will be there, even if you are expressing your anger. Okay, so just be positive. Just keep in your heart, just cool mind you should have, clean heart you should have. Never the bad words will come. There will be no option for the choice. How the choice we can do? No, we can't do any choice. If I'm having good thoughts, never the bad words will be there in my mind. जब words ही mind में नहीं है, तो वो गुस्से के टाइम पे बाहर कहाँ से आएंगे? When I'm having very clean heart, good mind, तो words के तो बुरे आने का मतलब we need not to make any choice. We can't make any choice. Always the good thoughts, good words will be there. गुस्सा आया, हम बोलेंगे आपने ऐसा क्यों किया? Why
did you do this? It doesn't mean कि हम किसी को abuse कर रहे हैं or something. तो कोई choice नहीं बनती. If your heart is good, if your mind is good, always the clean thoughts will be there. Of course, maybe out of anger the sound is raised, but not the bad words will come out. So there is no choice or something, nothing you have to make. Just go with the plain and good mind. Words हमेशा अच्छे वापस आते हैं, बाहर से आते हैं. So to summarize, आपके intentions हमेशा हमेशा अच्छे होने चाहिए. Keep a clear heart and clear vision. Then ऐसी कोई Exactly. situation नहीं आएगी जब choice of words करने पड़े. Okay. और one thing I हमारे viewer would say हैं. Yeah, please. one thing I would say, always keep smiling. कुछ लाइफ में कुछ नहीं है. Yeah. बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स यू कैन क्लियर अप इफ यू आर हैविंग स्माइलिंग फेस. ऑलवेज स्माइल, स्प्रेड द स्माइल. आप कितनी भी परेशानी में हो, दूसरे को वकअप करो. हमेशा आपके सामने यू आर फेसिंग द सेम सिचुएशन बट स्टिल अदर इज शेयरिंग हिज और हर प्रॉब्लम ना. जस्ट वकअप हिम. नो यू कैन डू इट. अरे ये तो कुछ नहीं है. दो यू आर स्टैंडिंग इन द सेम वाटर बट स्टिल जस्ट let that water throw away and do not let him show that you are still in the same water. Just let him go और उसको हमेशा बकअप करो. God will help you. हमारे व्यूअर है, उनका क्वेश्चन है हाउ टू रीड प्रॉपरली. हमने राइटिंग स्किल्स के बारे में बात कर लिया, स्पीकिंग स्किल्स के बारे में बात किया. नाउ इट्स कमिंग टू रीडिंग स्किल्स. तो आप कुछ रीडिंग स्किल्स के बारे में गाइड करें. Well, it depends. Like I can see, yeah, of course, I can see the question. So I would say one thing, कि reading depends on your level. Which level it depends on the reader. कि आप किस level की reading की बात करें. अगर हम middle level से चले, not the basic level. So if you go with the middle level, then just make this in your habit. See, habit is very much important. To get this in your habit is really important. Habit तो बहुत जरूरी है. रोज का नियम बनाइए that I am waking up early in the morning and I have to read at least 8 to 10 lines daily. 8 at least. You know, it will give you fluency also. It will impact your fluency also, not only the reading. Of course, the reading will be good. It will be on the good track. But I would say one thing: it will really give you good spoken English. Slowly. Uh, Here, I would mention first one thing from the reading and just moving away from some other topic. But that is really important to mention. You know, when a child is there, he or she takes birth in India. Then of course he or she speaks English only. ठीक है ना? It speaks English. Sorry, Hindi. In India, we speak Hindi. And when a child is taking birth in some foreign country, then he or she speaks only English. He or she is getting the atmosphere, na. So this is the thing. कि आप read करना शुरू करो daily. Your mind will start accepting that only in which atmosphere you are all the time. तो जब आप एक बार ये habit बना लेंगे कि daily I have to read 7-8 lines, slowly mind accept करना शुरू कर देगा. English को ही it will accept. तो उससे क्या होगा? Not only your reading will be improved, but also आपकी spoken English भी improve होना शुरू हो जाएगी. Mind will start inculcating in your mind. धीरे progress करना शुरू करेंगे, develop करना शुरू करेंगे. And now I am coming to reading. ये तो reading का एक extra I told you that advantage. Your spoken English will be fine. I am coming to the reading. See, reading how you have to do. Just make daily 10 lines you have to read, as I just mentioned. 10 lines daily read कीजिए. और कैसे करना है? अगर आप अटक जाते हो, you get the pauses. So need not to worry about. डरने की कोई जरूरत नहीं है. Pauses आ रहे हैं, आने दीजिए. एक लाइन को, एक सेंटेंस को क्लियर कीजिए. 8-10 लाइन्स एक साथ नहीं पढ़नी है. You have not to read all together all the lines. Just go one sentence. एक सेंटेंस को रीड कीजिए. अभी फर्स्ट टाइम you will stuck. Second time again maybe you are stuck. Third time you will not stuck. That's damn sure. आप नहीं स्टक करोगे. तो आप क्या करना है आपको? जहाँ पे आप स्टक कर रहे हैं ना, जहाँ पे होता है हम रुक कर पढ़ते हैं. हमारी फ्लुएंसी वी डोंट हैव, तो हम रुक कर पढ़ते हैं इनिशियली. तो आपको क्या करना है? जिस वर्ड पे आप रुक जाते हैं, जो वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहा है, first make clear the pronunciation of that, and then again read it, and then again read it. See, this remedy you have to follow just for the 7 to 8 days, and after 7 to 8 days you will really find many changes in you in the reading. Okay, so एक सेंटेंस 10 लाइंस का आपको you have to make this कि मुझे 10 लाइंस रोज करनी है. उसमें एक सेंटेंस से शुरुआत कीजिए. क्लियर वन सेंटेंस by reading at least 2 to 3 times, then next sentence, and you know after the 10th attempt, मतलब either the same day or the next day, आपका पूरा पैरा एक बार में क्लियर हो जाएगा. रीडिंग इंप्रूव होगी. जस्ट रीड कीजिए इन द पार्ट्स, नॉट ऑल टुगेदर कि पूरा ऊपर से नीचे तक उठाकर पढ़ दिया. नो, इट्स नथिंग. एक सेंटेंस को क्लियर कीजिए, हर्डल्स पर वर्क कीजिए, प्रोनाउंसिएशन को क्लियर कीजिए, एंड रीड इट एट लीस्ट 3 times. Slowly reading will be improved.
वेल एक्सप्लेन मैम। डिस्कस और एक जो करते पॉइंट आपने मेंशन किया एटमॉस्फेयर का, सो इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एक इंग्लिश स्पीकिंग एटमॉस्फेयर होना चाहिए। इंडियन फैमिलीज में हमेशा ऐसा होता है कि हिंदी में बात करते हैं, बट सिबलिंग्स आपस में 1 आवर भी अगर इंटरेक्ट करें तो ये एक अच्छी पॉइंट है कि वो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बेटर कर एग्जैक्टली सकते हैं, बिकॉज वो हेजिटेशन वहां पे नहीं होती है, बट बाहरी लोगों के साथ वो हेजिटेशन निकलती है। एग्जैक्टली जी। सी getting your question right means you want to say like we have to give a start from the siblings, right? And आई then एम we जस्ट सेइंग कि have हम, हाँ, एटमॉस्फेयर एक जो आपने कहा ना, तो उसको घर में जैसे कि सिबलिंग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ थोड़ी देर भी अगर बोल लिया, तो वो भी तो एक इंटरेक्शन है ना। दे शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर होम। exactly this is the best remedy, I would say this is the best remedy. See, start creating the atmosphere from your own home only, just and from where you have to start, you know, the lunch plate is in front of you, the dinner plate is in front of you. What you have to do? Oh, mama has served me the food. I can see this is a small plate, but there are many scrumptious items inside it. Oh, I'm so happy. I'm gonna eat it. Okay, so not only you have to just speak expressions लाइए, बोलिए छोटी छोटी चीजों से। वॉशरूम में आप जा रहे हैं ना, यूटिलाइज योर टाइम। I'm going to take bath. Oh, I have to warm up my water. Oh, mama, please do this. तो बच्चों से हम इन चीजों को इनकलकेट कर सकते हैं। बच्चों से पेरेंट्स में आ जाती है। पेरेंट्स यू आर हैविंग गुड इंग्लिश, गो विद योर चाइल्ड। बच्चों से बोलिए, छोटी छोटी चीजों से इंट्रोड्यूस कीजिए। लाइक बुक्स आर यू नो एट द 6 and 7 एवरीवेयर बुक्स पड़ी हुई है, बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो जस्ट स्टार्ट विद द लंच डिनर, स्टार्ट विद द वॉशरूम एक्टिविटीज, स्टार्ट विद बुक्स एंड स्टडीज। छोटी छोटी चीजों से इंग्लिश को डेवलप कीजिए इनसाइड द चिल्ड्रन। और बच्चों को इंग्लिश आती है, अगर टूटी फूटी भी आती है, पेरेंट्स आर नॉट केपेबल, वी आर लिविंग इन इंडिया, सो सबके साथ है, घरों में इतना एटमॉस्फेयर वी आर नॉट हैविंग, दैट्स नो मैटर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी छोटी चीजों से इनकलकेट कीजिए हैबिट्स को। पहले वर्ड से स्टार्ट विद द वर्ड्स, स्मॉल वर्ड्स। रिजोल्यूट, मुझे हिंदी बोलना ही नहीं है, आई हैव नॉट टू स्पीक हिंदी, हिंदी इज माय मदर टंग, आई वुड से वन थिंग, आई रियली रिस्पेक्ट हिंदी। मुझे ऐसा लगता है मैं हिंदी में बोलूं फुल ऑफ एक्सप्रेशन। अगर आपकी मदर टंग में आपके एक्सप्रेशंस नहीं है तो इंग्लिश में कभी नहीं आएंगे। सो फर्स्ट हैव द गुड कमांड ऑन हिंदी, देन गेट इन इंग्लिश। पहले हिंदी पे कमांड अच्छी लाइए, अपने वर्ड्स शब्दों में क्लिष्टता लाइए, अपने वर्ड्स को शब्दों को क्लिष्ट कीजिए, उच्चारण अच्छा कीजिए, इंग्लिश ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, जान आ जाएगी, यू नो। तो अभी आप इंग्लिश को स्टार्ट करो, छोटे छोटे वर्ड से स्टार्ट करो, ठीक है। आपके सामने जो सामान है, एक हैबिट बनाओ हफ्ते भर तक, मुझे हर चीज आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। छोटे छोटे वर्ड्स को फिर सेंटेंसेस में कन्वर्ट करो, एक्सप्रेशन डालो में, फिर आप देखिए हफ्ते 10 दिन में ही खुद में कॉन्फिडेंस आता है, नॉट ओनली टू द चिल्ड्रन, इवन टू द यू नो यंग पीपल, और बड़े लोगों को भी आता है। तो बच्चे हैबिट इनकलकेट कर सकते हैं, 7 8 क्लास के बच्चे, 5th क्लास के बच्चे, नाउ द स्कूल इज गिविंग वेरी गुड, तो जस्ट गो विद इट। आप जो स्कूल में आप सीख रहे हो, जस्ट इनवाइट होम, घर में अप्लाई करो, अपने पेरेंट्स को सिखाओ। पेरेंट्स को आता है तो बच्चों से छोटे छोटे सेंटेंसेस से बात कीजिए, बट एक शानदार इंग्लिश के साथ कीजिए। सिर्फ ये नहीं हमने बोल दिया गो टू वॉशरूम, डू दिस, जान डालिए अपनी स्पीकिंग में, बच्चों में जान अपने आप आ जाएगी उनकी स्पीकिंग में। वो जो वॉशरूम, जस्ट वार्म अप द वाटर, लाइक जस्ट स्पीक इन अ मैनर, ठीक है। वर्ड्स में जाना, अगर हिंदी में पहले से ही जाना है तो इंग्लिश में ऑटोमेटिकली वो आएगी, बट अगर नहीं भी अच्छी कमांड है हिंदी का, नॉर्मल भी हिंदी, इंग्लिश में शुरुआत कर दीजिए, जस्ट गिव अ गुड बिगिनिंग, पूरे एक्सप्रेशन के साथ में बोलिए इंग्लिश को, ठीक है ना। तो स्टार्ट विद वर्ड्स, देन स्मॉल सेंटेंसेस, देन स्टार्ट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, सब कुछ एक्सप्लेन करना शुरू कर दीजिए विद इन योर सिबलिंग्स, सब कुछ एक्सप्लेन कीजिए। मामा, यू नो, सपोज योर ब्रदर्स नेम इज सोनू, सोनू यू कैन सी मम्मा हैज सर्व्ड अस द डिलीशियस फूड, वाओ वी आर गोइंग टू ईट इट, व्हाट शी हैज सर्व्ड इनसाइड इट, लेट अस सी। तो लाइक दैट स्पीक, ठीक है। अपने आपस में बहनों में बात कीजिए, पेरेंट्स बच्चों से करें, बच्चों पेरेंट्स से करें, लाइकवाइज यू विल बी इम्प्रूव। सो मेक एन एटमॉस्फेयर फ्रॉम होम ओनली, घर से बनाइए, देन गो टू योर फ्रेंड्स, कॉलिंग, चैटिंग। अभी तो सोशल मीडिया का टाइम है, अभी तो मोबाइल, दीस काइंड ऑफ गैजेट्स आर देयर, यू कैन डू चैट ऑल द टाइम। बच्चे करते क्या, वैसे भी तो सारा टाइम यू आर होल्डिंग द मोबाइल इन योर होम्स, दो इट इज अ वेरी बैड एक्टिविटी, बट स्टिल आप कर तो रही हो ना, तो यूटिलाइज समथिंग, इससे भी कुछ सीखो, बुरी चीजों से भी कुछ सीखिए, उसमें भी तो कुछ सीखिए। तो जस्ट डू चैटिंग इन इंग्लिश, टूटी फूटी करेंगे स्टार्टिंग में, यू विल डू इन द ब्रोकन पीस
pieces. Okay, slowly you will be on track. So words and then sentences, then thoda sa jandar English. Let's just go with it within your home atmosphere with your siblings and parents and friends. Okay, ma'am. And lastly, English को as a take it as a language and take it easily because जिन्हें English नहीं आती है, जिनको हिंदी ही आती है और जिन्हें English आती है हिंदी नहीं आती है, उनके लिए भी ये equally problematic होता है कि उन्हें हिंदी आए. तो ये just दोनों languages हैं. Take it easily और जो भी मैम ने आपको tips बताए, आप उस पे work करें and then you will be able to talk in English. Of course, Hindi So and English both are equally important. both are equally Hindi and English. important. Yes. हिंदी पर बहुत कमांड लेकर आइए. इंग्लिश में इंग्लिश बोलना नहीं आएगी, हिंदी से बोलना नहीं आएगी, आई अंडरस्टैंड, बट आपको स्ट्रेस आएगा, आपको बॉडी लैंग्वेज के साथ में एक्सप्रेस करना आएगा. सो जस्ट वर्क ऑन योर हिंदी ऑल्सो. Okay. And moving to the last question, what would be your last piece of advice which you would like to share with our viewers? Of course, that I was going. The piece of advice, if I like to say something, confidence लेकर आइए. Just bring a confidence into you, and all the time just have the positive thoughts. All the time have positive thoughts in your mind. I have already told you. Again, I am saying, clean heart रखिए, ठीक है ना. सबसे पहले अगर हम इंग्लिश के टॉपिक पे बात करें, if we talk about English, you are best. You are best. Whosoever you are best. Just keep learning the things. Start applying that in your life. Okay, मतलब इंग्लिश में चीजों को सीखिए, अप्लाई कीजिए. Go give a start from the smaller sentences. छोटे छोटे sentences स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना. छोटे छोटे sentences स्टार्ट कीजिए. स्लोली स्लोली फ्लुएंसी आ जाएगी, ठीक है ना. अगर हम अपने आप को मोटिवेट रखने की बात करें, इफ वी टॉक, अगर आप चाहते हो कि ऑल द टाइम आई हैव टू बी, आप आपको करना क्या है, जस्ट स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सबसे पहले तो सुबह मॉर्निंग में अर्ली उठना शुरू कर दीजिए. सेल्फ एनालाइज कीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए, मेरी कमियां क्या हैं, व्हाट द इंप्रूवमेंट आई नीड टू ब्रिंग इन माई सेल्फ. मुझे अपने अंदर इंप्रूवमेंट क्या लेकर आना है. हमेशा ध्यान रखिए, सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट रेमेडी. आप जितना सेल्फ एनालाइज करोगे खाली टाइम में, जस्ट ट्राई टू थिंक योरसेल्फ बट इन द काम एटमॉस्फेयर. सो बेटर टाइम इज जस्ट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द ब्रह्म मुहूर्त. ट्राई टू वेक अप, मॉर्निंग में उठिए, एनालाइज कीजिए, कमियों पे अपनी वर्क करना शुरू कीजिए. टेक इन द पीसेस, एक एक छोटी छोटी कमी, मतलब स्प्लिट यू नो ऑल योर मैटर इनटू द पीसेस. स्प्लिट कीजिए उसको, फिर देखिए व्हाट आई हैव टू डू, मुझे कैसे इन पे वर्कआउट करना है, ठीक है ना. इससे आपकी पूरी पर्सनालिटी में निखार आएगा. योर होल पर्सनालिटी विल बी इम्प्रूव. धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव होती जाएगी. कॉन्फिडेंस रखिए, द फर्स्ट थिंग, आइदर द स्पीकिंग part or like self motivation for life. Have the confidence in you, then start working on your, you know, whatever जितनी भी कमियां हैं आपके अंदर, start working on them. उन पे धीरे धीरे से वर्क करना शुरू कीजिए कि मुझे अगर मेरे अंदर ये कमी है तो मुझे slowly I have to eradicate it. ओके, धीरे धीरे उनको eradicate करना शुरू कीजिए. अच्छे से ट्रीट द पीपल, लोगों को अच्छे से ट्रीट कीजिए, ठीक है. गुस्सा आ रहा है, कुछ हो रहा है, निकाल दीजिए, दिल साफ रखिए. जस्ट कीप योर हार्ट क्लीन एंड माइंड. धीरे धीरे इंप्रूवमेंट खुद से आना शुरू हो जाएगी. अपनी पर्सनालिटी को अच्छा कीजिए, अपने 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 अंदर चेंजेस लेकर आइए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए. राइट. Yes, ma'am. So now we have come to the end of today's session. Thank you so much, ma'am, for coming and sharing your valuable knowledge with us. Thank you to our viewers as well for spending your valuable time. Hope you all have liked the session. Thank you. Namaskar. Most welcome. Thank you so much. Even my pleasure to be with you for some time. Thank you so much. Thank you.